Assalamu alaikum everyone. Welcome to another कानूने कार्रवाई late night session with वकील online. मेरा नाम है रमला बेग और आज मुझे ज्वाइन किया हुआ है जुगनू काजमी ने. She is a practicing lawyer in Islamabad. She's a Islamabad chapter for Women in Laws Initiative and currently serves as a state counsel and defense counsel on state expense in Islamabad High Court. Jugnoo, thank you so much for joining us. Thank you for having me on your show, Ramla. We finally made it happen. Yeah, we finally made it happen, and on a topic that is much needed to be discussed. Zahir Jaffer की जो trial चल रही है, which is a murder trial, उसके बारे में काफी सवालात लोगों ने हमारे वकील ऑनलाइन ग्रुप पे भी पोस्ट किए हैं, और just generally people have a lot of questions about his trial. तो मैंने आपको इसलिए बुलाया है आज because I wanted you, I know that you practice criminal, तो आई वांटेड टू आस्क यू कि आप थोड़ा सा हमें कुछ सवाल हैं तो उनके जरा जवाब दे दें. एंड आई थिंक इफ एनीवन हूज वाचिंग राइट नाउ, अगर आप अभी आए हैं, ज्वाइन किया अभी आपने, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमारे आप सवाल लिख सकते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मर्डर ट्रायल्स और मेंटल हेल्थ एज अ प्ली, तो आप फील फ्री टू टाइप इन एंड जुगनू एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस देम. तो पहला सवाल जुगनू मेरा आपसे यही होगा, गेटिंग राइट इनटू इट, कि जो ट्रायल, पहले ये बता दें कि जो जाहिर जाफर की जो मर्डर ट्रायल है, दैट्स कॉल्ड अ मर्डर ट्रायल, जो उसकी चल रही है, उसमें अभी जो है ट्रायल किस स्टेज पर है? देखिए जी, ज़्यादातर तो पता चलता है मीडिया के थ्रू, क्योंकि ऑफ कोर्स मैटर इज सब जुडिस. तो जहाँ तक पता चला है वो यही है कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है. तो उनकी एग्जामिनेशन चीफ ऑफ कोर्स पहले होती है और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है. अभी जो आज की वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये थी कि इन्होंने बीच में ट्रायल के एक दरख्वास्त दी थी जाहिर जाफर के लॉयर्स ने कि ये जो है इनके बेसिकली सेड कि ये मेंटली इल हैं, तो उसकी एप्लीकेशन दी थी लॉ के तहत जो उनके पास प्रोविजन है. तो वो जज साहब ने पहले रिजेक्ट कर दी थी, बट अपेरेंटली उसमें अब ये हुआ था कि एक मेडिकल बोर्ड बैठा है जो कि अडियाला जेल में ही बैठा है, दैट्स वेयर ही इज इनकार्सरेटेड एंड इम्प्रिजन्ड, और उन्होंने उनको मेंटली फिट डिक्लेयर किया है. उसका एक प्रोसेस होता है. ये एक्चुअली बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी सफिया बानो वर्सेस होम डिपार्टमेंट की, एंड दिस वाज अर्ली लास्ट ईयर. और उन्होंने उस जजमेंट में डिस्कस किया था कि एक तो मेंटल इलनेस होती क्या है, और फिर मेंटली जो इल प्रिजनर्स होते हैं या अक्यूज्ड होते हैं उनका क्या रिकोर्स है लॉ में, और वो डिफरेंट उन्होंने बाइफरकेट किया था. I would really want you to talk about this judgment in detail, but before we get into that, आप थोड़ा सा मुझे बताती हैं for like a lay person कि मर्डर ट्रायल की एक रेगुलर मर्डर ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल की क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, और इस वक्त किस स्टेज पर है जाहिर जाफर, और क्या यूजुअली क्रिमिनल ट्रायल्स दे क्या उनकी डू दे एक्चुअली टेक दिस लॉन्ग? They do, and the thing is, they just don't take this long in Pakistan. Yeah, otherwise bhi hota. I mean, they've been. This is a trial. I would like to call it no regular trial because of course there's lots of media attention, और it's understandable also क्योंकि एक बहुत बहुत unfortunate incident पेश आया है. और ये बाहर भी अगर आप देखें, चाहे वो US हो, UK हो, उसमें भी टाइम लगता है. हाँ, शायद पाकिस्तान में ज़्यादा लगता हो, बट उसके कुछ रीजंस हैं. उसमें रीजंस की अगर बारी बात आए तो उसका ये कि कुछ एक तो जनरली द आइडिया इसके थोड़ा जुडिशियल सिस्टम जो है इसमें बैकलॉग काफ़ी है केसेस का. जो जजेस हैं देर ऑफ कोर्स वेरी ओवरवर्क्ड, एंड दूसरा ये काफ़ी दफ़ा हमारे यहाँ हड़तालें भी होती हैं, उसकी वजह से डिले हो जाता है, या लॉयर्स की तरफ से एडजर्नमेंट्स वगैरह आती हैं. जैसे जहाँ तक आपका सवाल रहा मर्डर ट्रायल की, एक जैसे एक रेगुलर ट्रायल क्रिमिनल का चलता है वैसे ही है ऑफ कोर्स, मगर उसमें जो सबसे जो क्रक्स आता है, जो क्रक्स होता है केस का, वो ऑफ कोर्स जब एविडेंस पेश होता है और जब एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन होती है प्रोसिक्यूशन की और डिफेंस की, और फिर ये देखते हैं कि डिफेंडेंट ने आगे से प्ली क्या पेश किया है. अब यहाँ जो इस केस की अगर बात की जाए तो इसमें काफ़ी ओवरवेलमिंग जो है एविडेंस है, क्योंकि और इसमें अगर जिन लोगों ने फॉलो किया उन्होंने ये भी देखा है कि कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं अक्यूज्ड की फैमिली की तरफ से भी आई, अक्यूज्ड की तरफ से भी आई, फिर एविडेंस भी है, वीडियो एविडेंस भी है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये बाकी अक्यूज ने शायद किया हुआ हो ये. मगर ऑफ कोर्स दिस इज, एक तो ये हम बात कर सकते हैं जो हम टीवी पे पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं या न्यूज़ में पढ़ते हैं, मगर ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं है गिल्टी.
तो वो बिल्कुल। फिर अभी इनकी जी मेंटल इलनेस की प्ली आई थी, तो उसकी इस स्टेज पे अभी ट्रायल पहुंचा है। इतनी देर लग जाती है ट्रायल पे, और फिर ऐसा होता है कि अभी तो यहाँ जो एडिशनल सेशंस जज हैं उनके पास ट्रायल हुआ है, फिर ये हो सकता है कि कुछ पार्टीज अपील में जाएं, फिर वो हाई कोर्ट जाती हैं, पहले सेशंस जज के पास, फिर हाई कोर्ट जाती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वो होते होते काफी लंबा हो जाता है। अच्छा, सो जो एक रेगुलर ट्रायल होती है उसका कोई आप थोड़ा हमें बताते हैं, स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जी जी। जी, मैं उसको एक आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे देती हूँ। बेसिकली ये होता है कि एफआईआर कटती है। एफआईआर जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ज़ाहिर है कोई भी जाके उसको लिखवा सकता है। फिर उसका ये होता है कि पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, चालान पुलिस को फिल आउट करना पड़ता है, एक सर्टेन टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर पुलिस को चालान चालान बेसिकली उनकी जो सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं अंडर 161 और लोगों से बात करती है, अपनी जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो फिर चालान में पेश करते हैं। फिर चालान के बाद ये होता है कि वो अक्यूज़्ड को ज़रूरी होती है ये कॉपी देना चालान की, और क्योंकि फिर अक्यूज़ से क्वेश्चन्स पुट किए जाते हैं, जो है अंडर 342 या 340 एक ऑन ओथ स्टेटमेंट होती है, विदाउट ओथ होती है। फिर जब आपका एक्चुअली जो ट्रायल शुरू होता है वो तब होता है जब चार्ज फ्रेम हो जाए, और जब चार्ज जब फ्रेम हो चार्ज जाए तो फ्रेम फिर हो। अक्यूज से पूछ एब्सोल्युटली फिर अक्यूज से पूछते हैं कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। अगर इफ ही और शी प्लीड्स नॉट गिल्टी, तो फिर उसके बाद पूरी कार्रवाई शुरू होती है, जिसमें ये होता है कि दोनों साइड्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं, और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में पुलिस भी होती है। बिकॉज क्रिमिनल लॉ में ऑफ कोर्स इट्स अगेंस्ट द स्टेट, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेट के अगेंस्ट जुर्म होता है। क्रिमिनल लॉ में, सिविल लॉ तो ये प्राइवेट पर्सनल डिस्प्यूट्स को बिल्कुल, कवर बिल्कुल। करता है। तो फिर उसकी स्टेटमेंट्स होती है, एविडेंस जो है रिकॉर्ड होता है। काफ़ी दफ़ा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस एंड द सर्कमस्टांसेस काफ़ी जो कुछ एप्लीकेशंस भी दी जाती हैं डिफेंस की साइड से, कभी प्रोसिक्यूशन की साइड से। ये पूरा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसकी 265 ऑनवर्ड, उसकी ABCDEFGHIJK तक और आगे जो है वो हम्म। पूरा एक क्रिमिनल ट्रायल को डील करते हैं उससे। तो हम्म। उन्होंने एक प्रोसेस लिखा होता है, एंड ऑफ कोर्स जो सेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर गवर्न होते हैं, कि जो आपने जुर्म या आपकी जो सज़ा क्या बनती है उस जुर्म की, वो पीपीसी में लिखे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली आई 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 बिलीव समबडी शेयर्ड एन आर्टिकल विद मी कि उसकी कोई मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन, एज यू मेंशन्ड, कि अडयाला जेल में की गई है। जी ये मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन कोर्ट ने ऑर्डर की थी, या ये द प्रिजन स्टाफ इटसेल्फ डिसाइडेड टू डू दिस? आई थोड़ा सा बताएं हमारे द पीपल हु आर वाचिंग एग्जैक्टली ये मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन किसने ऑथराइज कराई थी, और ये किसने रिक्वेस्ट की थी, या क्या ये प्ली थी जाहिर जाफर की? और अगर ये मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन हुई है और उसका रिजल्ट आया कि ही इज फिट फॉर ट्रायल, तो इसका क्या आउटकम है, क्या रिजल्ट है, एंड व्हाट डज दैट इवन मीन, फिट फॉर ट्रायल? जी, एब्सोल्युटली। बेसिकली ये आई अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट से कि ये क्योंकि मैंने भी वो न्यूज़ देखी थी कि ये जेल ने खुद किया है या कोर्ट ने ऑर्डर किया, बिकॉज़ कोर्ट की जहाँ तक पड़ा था वो यही था कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। मगर द आइडिया अंडर द लॉ रियली इज़ कि अगर कोई मेंटल इलनेस की प्ली आती है डिफेंस की तरफ से, तो वो जो कोर्ट है उसने खुद अपनी ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना होता है, लुकिंग एट द एविडेंस बिफोर इट, लुकिंग एट everything, all the facts, all the circumstances, all the evidence before it, कि क्या whether this person is mentally ill or not. अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ ये है, और कोर्ट का ये डिसीजन आता है, ऑब्जेक्टिव डिसीजन आता है, तो फिर एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, और मेडिकल बोर्ड जो है वो उसमें एक रिक्वायरमेंट है, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो डिटर्मिन करते हैं, एंड उसमें बचना मुश्किल होता है, बिकॉज क्या कहते हैं, वो जो आप साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट उनका काम ही होता है, तो वो एक्चुअली मेडिकली डिटर्मिन करते हैं कि आपको मेंटल इलनेस है, अगर है मेंटल इलनेस तो वो किस किस्म की है। इनके केस में शायद यही है कि आई कांट से विद सर्टेनिटी, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी रेड इन द न्यूज़, कि शायद probably the jail authorities took this initiative and got it tested, because जहाँ तक इसका कोर्ट का पड़ा था तो वो रिजेक्ट हो गई थी। अच्छा, जब अगर एक्सेप्ट हो So जाती है I would like उसकी to add something over here, and it's very interesting how यहाँ पे जो हमारे पास एक एविडेंस, जो फुटेज आई हुई है, या जो भी जाहिर जाफर की ड्यूरिंग द ट्रायल जो फुटेज हम देख लेते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, एंड वी जंप टू आवर ओन इवैल्यूएशन, वी ट्राई टू मेक एन असेसमेंट ऑफ आवर ओन
कि ये मेंटली इल है कि नहीं है। और आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप रीइटरेटिंग दिस फैक्ट कि एक तो ना तो हमारे पास वो एक्सपर्टीज है, वो स्किल सेट है कि हम बता सकें जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ समबडीज वीडियो कि ये मेंटली इल है कि नहीं है। और ये तो आप दिस शुड बी, ये तो जजेस भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, ये तो आप देते हो उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जिनका ये काम है। एंड उसके अंदर काफी उन केस की एग्जैक्टली हर क्लाइंट की हर पेशेंट की डिटेल्स केस हिस्ट्री में जाते हैं और काफी कुछ ऐसा कुछ असेस करते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। सो ये जो सवाल पूछते हैं लोग कि आपको क्या लगता है कि वो मेंटली इल हैं कि नहीं है, या मुझे लगता है कि वो मेंटली इल हैं, लोगों का ये कहना बहुत कैजुअली लोग बोल देते हैं। तो आई थिंक ये भी एक हमें थोड़ा सा आपस में ये समझना चाहिए कि वी डोंट हैव द रिक्विजिट स्किल सेट, या हमारे पास वो है ही नहीं कि क्या मैं बोलूंगी ट्रेनिंग कि हम इस पे कमेंट कर सकें या अपनी कोई जजमेंट पास कर सकें। Sorry, you may go on. I felt this was much needed. It's something that we needed to talk about. So I. No. Yeah, thank you for pointing that out. ये बिल्कुल सही बात है। और ये सिर्फ जाहिर जाफर की तो चले हमने एक एग्जांपल पकड़ी हुई and we're talking about that case, but this applies to any case, any plea of mental illness जो accused लेता है या कोई तो बिल्कुल यही वाली बात है। हम we are not the right persons to be deciding that, which is why एक medical board बैठता है जिनके पास expertise है, education है, training और decide करते हैं। And another thing that I want to talk about, this is a question that I am asked quite frequently. अगर कोई accused प्रूव हो जाता है कि उसको आया है मेंटल इलनेस, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ही और शी गो स्कॉट फ्री। जो जैसे मर्डर के क्राइम्स है, क्योंकि उसमें मर्डर में ये होता है 302 में कि इधर आपको डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस या और एंड एविडेंस प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस लीड करती है और फिर जो डिफेंस लीड करती है, बट प्राइमरीली जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस जो प्रूव करते हैं, बिकॉज द बर्डन इज ऑन देम अनलेस कोई स्पेसिफिक प्ली डिफेंस लेता है। तो उसमें आपकी जो सजा होती है या डेथ होती है या लाइफ होती है। अगर आपको सजा फर्ज करें डेथ की मिली है, डेथ पेनल्टी मिली है, और अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आप मेंटली इल हैं, तो आप यू वोंट गो स्कॉट फ्री, यू वोंट बी रिलीज्ड फ्रॉम जेल। आपकी वो कम्यूट हो जाएगी। कम्यूट का ये मतलब है कि वो डेथ से कम होके लाइफ पे हो जाएगी, और लाइफ आपकी होती है मतलब वैसे 25 साल होती है, बट जेल्स में रिमिशंस वगैरह लग के तकरीबन 14 साल हो जाती है। So ये जो आपने बताया, सॉरी ये आपने I'm cutting you off again, but ये आपने बताया था कि कम्यूट हो जाती है डेथ से लाइफ पे आ जाता है। प्लीज डू एक्सप्लेन लेटर ऑन कि ये क्यों आता है और इसकी बेसिस क्या है हमारे पाकिस्तानी लॉ में, बिकॉज आई बिलीव यू मेंशन्ड दिस जजमेंट एज वेल अर्लियर एंड आई थिंक उस पे हमें जरूर बात करिए, बट प्लीज गो ऑन। जी नहीं, ये आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। I have a very bad habit of like if I figure मुझे कोई सवाल आता है ज़हन में कि अच्छा ठीक है ये definitely लो address करना चाहिए, तो I'm so sorry, please go ahead. No, it's completely fine if there's बस यही है कि वो I just to reiterate उसका ये मतलब नहीं, because that's generally the impression and the idea that I get also, क्योंकि this is a question that is asked and I don't blame people asking, because ये एक lay person point of view again, हम मैं और आप lawyers हैं, हम ज़ाहिर डॉक्टर्स नहीं हैं, हम डॉक्टर्स की कोई बात नहीं कर सकते, हम engineers नहीं हैं। Likewise lawyers से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उनको लोगों को obviously एक area of expertise होता है, ये area of understanding होता है, if not expertise. तो ये that's pretty much it. Yeah. Okay, so आप बता रही थी कि सेंटेंस कम्यूट हो जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि क्यों होता है एंड द डिफरेंस बिटवीन कि उसकी whether he is mentally fit to stand trial and otherwise उसकी mental health के जो assessment है। So basically, the section over here is जिसमें आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो सेक्शन 84 है पाकिस्तान पीनल कोड का, और उसकी जो क्या कहते हैं the idea, जो पहले I would like to explain कि mental illness का है क्या। वो basically जो and this is again, and I'm glad that this judgment came into being or was passed by the Supreme Court, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें clarify हुए हैं और उसमें काफ़ी long deliberations हुई थी with respect to Pakistani law as well as international law, international covenants जो पाकिस्तान ने ratify किए हैं, and एक बहुत holistic view के साथ उन्होंने एक judgment दी थी, और उन्होंने basically जो खुलासा उस judgment का है या जो decision उस judgment का है वो यही है कि unable to mental illness अगर
ये जो थ्रेशोल्ड है या स्टैंडर्ड है किसी भी अक्यूज्ड का देखा जाता है वो ये है मेंटल इलनेस का कि या एक मेंटल जो कॉम्पिटेंस का कह सकते हैं कि ये कि ही इज और इनकॉम्पिटेंस का कि अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड द rationale or reason behind the punishment. behind this This death is penalty. this is a test that was laid down by the judgment, keeping in mind, precedent, international precedent, local precedent, जो national हमारे पाकिस्तान का है, by precedent I mean case law जो पहले courts decide कर चुके हैं. और जो है क्या कहते हैं जो सेक्शन 84 नाउ देयर इज अ बाइफर्केशन. एक होता है प्री ट्रायल एज इन जैसे आगे कोई ट्रायल चल रहा हो उसके बीच में कोई एप्लीकेशन दी जाए मेंटल इलनेस की, या एक है कि जब आप कन्विक्ट हो चुके हो ऑलरेडी, आपको सेंटेंस मिल चुका हो और आप जेल में अपनी सजा काट रहे हो. तो जब ट्रायल जब हो रहा होता है तब आपको डील करता है सेक्शन 84 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड. और जब आपकी सजा हो चुकी होती है तो वो होते हैं सेक्शन 464 एंड 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का. और जो 84 है वो यही कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ डूइंग and by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act and that it is unlawful or illegal. और ये मैंने verbatim पढ़ा है 84 से. तो ये जो और because this is a specific plea, the अगर ये कोई mental illness की plea defense फर्ज करें रेज करती है तो ये फिर ओनस भी जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है. बिकॉज हम जब लॉ में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि बर्डन किसके ऊपर है प्रूव करने का, वैसे तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, बट जब डिफेंस ये प्ली होती है तो वो उस पर शिफ्ट हो जाती है. बट जजमेंट ने ये भी होल्ड किया है कि अगर ठीक है ये डिफेंस पे मतलब डिफेंस को प्रूव करना होता है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने प्ली ली है, मगर अगर कोई प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है जो डिफेंस के फेवर में जा रहा है तो वो उस एविडेंस को यूज कर सकते हैं. तो ये दिस इज टू आपका जो क्वेश्चन था कि whether he or she or whether an accused is fit to stand trial, तो ये वो सारी बात है. फिर जब एक दफा हो जाता है 464 और 465 के उसकी जो है एक अलग दूसरा ये होता है. और एक और मैं ये बात दोबारा मैं रिएटरेट करना चाहती हूँ कि ये इसके 2 स्टेप्स हैं. इसके एक तो पहले हमेशा जज के ऊपर एक ओनस होता है कि वो अपने खुद देखें, जज करें कि अगर उनके पास एप्लीकेशन आती है और अगर एप्लीकेशन नहीं भी आती, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, if the judge, if he or she feels के the accused is not mentally competent, तो वो खुद भी एक इंक्वायरी बिल्कुल, तो वो खुद पहले करेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू रेफर टू अ मेडिकल बोर्ड. एंड अंडर द जजमेंट उन्होंने ये कहा है कि मेडिकल बोर्ड की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बताई है कि इसमें 3 साइकोलॉजिस्ट बैठने चाहिए, 3 साइकाइट्रिस्ट बैठने चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी नोटिफाई करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी नोटिफाई करना चाहिए. सो इट्स अ वेरी गुड उन्होंने ले डाउन किया हुआ है. बट अगेन उसका उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेंटल इलनेस नोबडी कैन गो स्कॉट फ्री, क्योंकि मेंटल इलनेस एक डिफेंस एक प्ली है जो मिटिगेट करती है आपके सर्कमस्टांसेस. इट डज नॉट इन्वॉल्व यू ऑफ द क्राइम दैट यू हैव कमिटेड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, व्हिच इज एब्सोल्युटली. Yeah, so I was just thinking, ये जो हमारा you mentioned section 84 PPC, but मैं बात so I was wondering कि जो इसकी भी evaluation हुई है कि whether he is mentally fit to stand trial. अगर इसकी evaluation आती that he is not mentally fit to stand trial, what does that mean? Does it mean that he was mentally ill at the time that he committed the offense, जब उसने वो murder commit किया तब, या that means कि अभी he is not mentally stable, तो जब तक वो stable नहीं होता हम इसकी trial continue नहीं कर सकते. थोड़ा इसके बारे में बताएं कि what does it mean, fitness to stand trial? Fitness to stand trial उसका यही है कि nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act that he is doing what is either wrong or contrary to law. तो ये अगर 84 में ये हो जाता है कि ये उस टाइम पे ही नहीं था तो of course he or she has more room और अगर उनकी successful हो जाती है plea as opposed to taking a plea after they've been convicted, जो 464 या 465 की होती है, तो वो फिर कम्यूट हो जाती है. ये जजमेंट ने भी इसकी जो वेरियस क्या कहते हैं सिनारियोज उसको जहन में रखा है. दिस इज समथिंग दैट द मेडिकल बोर्ड रियली हैज टू इवैल्यूएट एज वेल के
And I think they have it very difficult. Their job is not easy because they need to see कि you know अगर ये onslaught आया था mental illness का तो ये किस time पे आया था और ये क्या है, which is why, as rightly pointed out by you, ये एक you know, they really go into the history, they go into the parental history, they go into what do you call it, genes, genetics, childhood का देखते हैं trauma है या नहीं है, etc. अभी इनकी ट्रायल का देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी हमें ऑफ कोर्स टाइम के साथ-साथ ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किसने ऑर्डर किया था और क्या है। बट अब एज़ इट appears right now, of course, it's not fair to comment a lot because the matter is sub judice. मगर जो अभी तक समझ आया उनके पास यही एक डिफेंस उनको देखा था because otherwise there's a lot of it seems like, of course, the court has to decide, but it seems like that there's a lot of overwhelming evidence that this act may have been done. Yeah, of course. थोड़ा mental health laws के बारे में बताएं. For example, अगर outside of Zahir Jaffer's case, if any person going through a criminal trial in Pakistan, तो what kind of laws and protections do they have? आपने बताया कि sometimes you can, obviously, your lawyer can plead that you're not mentally fit to stand trial. Other times, the magistrate also has the power कि वो आपकी मेंटल फिटनेस पे, मेंटल हेल्थ पे इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है. अब तो इसके अलावा और कौन सी प्रोटेक्शंस हैं, लीगल प्रोटेक्शंस हैं व्हाइल यू आर सर्विंग योर सेंटेंस, व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द ट्रायल? क्या डू दे ट्रीट यू डिफरेंटली अगर आपके पास पहली दफा ही कोई, इफ द मैजिस्ट्रेट हैज सम सॉर्ट ऑफ अ हिंट कि इसकी मेंटल हेल्थ नहीं स्टेबल, तो आर देयर एनी, कोई आपको कोई सहूलत होती है व्हाइल यू आर अंडर ट्रायल इन जेल में, या कोई आपको स्पेशल कोई प्रोटेक्शंस मिलती हैं कि नहीं मिलती? एब्सोल्युटली, और मिलनी भी चाहिए। ये होता है कि जैसे अभी जो केस की भी बात की तो उसमें जब डिक्लेयर हुआ कि वो जो दो प्रिजनर्स थे वो स्किज़ोफ्रेनिक हैं, तो उनका यही था कि उनको कहा गया था कि ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ में इनको एडमिट की जाए। कोई भी जो आपकी मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उसको अवेल किया जाए और इनका बाकायदा ट्रीटमेंट किया जाए। जस्ट बिकॉज़ दे आर प्रिजनर्स, जस्ट बिकॉज़ दे आर इनकार्सरेटेड डज़ नॉट मीन दैट फंडामेंटल राइट्स डोंट अप्लाई टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो उनकी प्रॉपर एक देखभाल बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेंटल इलनेस टू टू वेरियस इलनेसेस, सर्कमस्टांसेस, मगर उनका ट्रीटमेंट और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स स्टेट की ही आती है कि उनकी एक तो असेसमेंट करवाएँ, अगर खुद भी जेल अथॉरिटीज़ को लगता है तो वो असेसमेंट करवाएँ और उनकी बाकायदा ट्रीटमेंट कराएँ, और ऐसा होता भी आया है कि ट्रीटमेंट हो और उनको, ताकि ट्रीटमेंट से ही बेहतर होंगे। Even if we talk about mental illnesses of people that who are not incarcerated, who are not imprisoned, the right way to go about is to get treated. तो ट्रीटमेंट फिर उधर भी होता है, ये स्टेट के ऊपर ये लाजमी है कि वो उनकी सारा जो एक प्रोसेस है उनको कराएं, उनको जितनी उनको साइकाइट्रिस्ट हैं जो मॉनिटर करें, और उनका कोई एक डॉक्टर उनको दें। जेल के अपने डॉक्टर्स होते हैं, अगर उससे नहीं हो रहा, जेल के पैनल पे होते हैं, तो देन दे शिफ्ट टू एवरी जेल हैज़ ए हॉस्पिटल दैट दे आर एसोसिएटेड विद, तो उधर जाके शिफ्ट करें उनको और उनको उस फैसिलिटी में रखें जितनी दिन और जितनी देर उनका डॉक्टर सजेस्ट करता है, नहीं करती है कि उनको जो है अंडर केयर रखना चाहिए। तो ये एक अच्छा बिल्कुल, और ये प्रिजन and अगर तो if you're under trial and if you are mentally ill, आपकी रिपोर्ट आई है mental health board, or is that what it's called, mental health board, जो आपकी मेडिकल बोर्ड बैठता है टू असेस मेडिकल बोर्ड, हाँ सॉरी, तो आपका अगर मेडिकल बोर्ड इवैल्यूएशन करके आपको रिपोर्ट देता है कि जी यू आर नॉट मेंटली फिट to trial, to stand trial, and then later on अगर उनको पता लगे कि he is mentally fit again after making some inquiry or some evaluation, तो the trial will continue. जी, that's the idea. एक comment जो मैं, sorry नहीं, बट वो ट्रीटमेंट करवाएंगे एंड देन द मेडिकल बोर्ड विल सिट, पहले वो देखेगा कि क्या है उनकी मेंटल इलनेस, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगी। जब ट्रीटमेंट मिल जाएगी तो फिर मेडिकल बोर्ड दोबारा।
So you saw my confusion over there between mental health board and medical board. The reason why I'm confused over here is because I'm wondering whether ये medical board में हमारी psychiatrist or psychologist ही होते हैं, right? If I'm not हाँ, wrong. वही होते हैं. The jargon is or Perfect. the name that you it's medical board ही है. With anything else, अगर वैसे Yeah. भी काफी No, दफा आपने it's देखा good to होगा know that we have. It's good to know that proper trained psychiatrists, बिल्कुल psychologists are doing your making your yeah. evaluation. Perfect. It's mandatory. यही It's सवाल mandatory. है. कोर्ट ने भी reinforce कर दिया है. जी, sorry, please. बिल्कुल सवाल है मोहम्मद तैमूर नदीम यही पूछ रहे हैं कि हाउ विल दे डिटरमिन इफ ही वाज मेंटली स्टेबल और नॉट व्हाइल कमिटिंग द क्राइम व्हाट एविडेंस विल दे obviously take into consideration जब वो ये decide कर रहे होंगे कि while committing the crime whether a person, and in this case Zahir Jaffer, was mentally stable or not. And I think Yeah. that's something that neither of us can answer because that's not what we trained for. We're not mental health practitioners. Or humne I'm pretty sure there's set of there's some evidence that they take into consideration. उनकी काफी investigations होती होंगी, उनकी evaluation वो करते होंगे. You can't. I'm sure उनकी not only Zahir's evaluation but also उनकी history में जाके maybe reaching out to people in his life before this event took place. There's a lot of evidence that these practitioners gather before they make such decisions and make such assessments. तो but उसके अलावा मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी before we get into more comments and more questions कि ये सफिया बानो की judgment आप बताई थी is a landmark judgment. So हमारे most of the people watching over here, they actually don't know exactly what do you mean when you say landmark judgment. क्या ऐसी protections हमारे law ने पहले नहीं दी हुई थी, technically दी हुई थी, और क्या इसमें what's the how does this judgment benefit a lay person, एक आम शहरी, एक आम citizen को इसका क्या फायदा होगा? ये इस तरह है कि पहली दफा they were, I mean, इस तरह की रह चुकी थी judgments, they were judgments, previous judgments of the Supreme Court, but जितनी डिटेल में इस जजमेंट में एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया, एंड देयर वर थ्री बेसिकली prisoners who had, you know, जो जिनकी वो थी रिव्यू पिटिशन लगी हुई थी वैसे, बट यू नो फॉर द सेक ऑफ वो कह देते हैं petitioners थे वो, उनकी ये थी कि दो जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिक थे और उनको जो है सजाए मौत मिल चुकी थी, एंड दे हैड स्पेंट a lot of time, like, you know, 30 years plus. So unke, without going into the specific details of their cases, the court basically first defined कि mental illness होता क्या है, जो कि मैंने पहले explain किया कि court की क्या test lay down उन्होंने किया है. फिर court ने ये देखा और उन्होंने कहा कि, you know, terms like lunatic, these are very outdated terms and these are wrong and incorrect and inappropriate terms to be used. इसको मद्देनजर रखते रखते उन्होंने जो है जो इंडिया की केस लॉ को देखा, उसको इवैल्यूएट किया, उसका एनालिसिस दिया, अमेरिका की केस लॉ को देखा. The court was very interested in learning, actually, because again, you know, they're not medical practitioners, so it was a learning process for everyone, which is why they got amici, जो amicus होते हैं, basically जो friends of the court होते हैं, assistance देते हैं. They don't represent any of the parties, but वो court notice पे या court call पे आते हैं और वो कोई experts लेकर आते हैं. तो एक बड़े अच्छे renowned psychiatrist आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, और वो वही समझा सकते हैं कि कब mental illness होती है and how to bifurcate and divide. And this is something that we, you know, sort of try to understand, but again, it you know, sort of goes over our heads. वो उन्होंने किया, फिर बताया, फिर उन्होंने इसी तरह बाइफरकेट किया कि यू नो फिट टू स्टैंड ट्रायल है या नहीं. अच्छा, किसी का जो है उस वक्त अगर प्ली नहीं ली गई या उस वक्त उनकी मेंटल इलनेस सेट इन नहीं की, बट ड्यूरिंग इनकार्सरेशन हुई है, तो फिर तब क्या किया जा सकता है. फिर 464, 465 कैसे प्ले आता है. अगेन इन्होंने जो इंटरनेशनल कवर्नेंट्स हैं उसको डिस्कस किया, और सारों को जहन में रखते हुए लोकल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इवन बिट्स ऑफ इस्लाम, एक्चुअली द लीगल, आई एम फॉरगेटिंग कि उन्होंने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ से कोट किया था, बट उन्होंने इस्लाम की प्रोविजंस कोट की थी, और फिर
the decision that the court came to was that the clients, जो हमारे clients थे, but the organization that we worked for, but जो prisoners थे, they're not, they are mentally ill, और इनकी जो death है, death sentence है, वो commute होके life हो जाती है, और उस वक्त उन्होंने life spend कर दी थी, beyond life कर दी थी उन्होंने actually spend, because उनके 30 years का sentence था. But जब court ने अपनी deliberations दी, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा कहा कि जो ऐसे केसेस हैं उसमें क्या होना चाहिए, जो कि अभी थ्रू आउट हमने डिस्कस किया है, कि ऐसा एक मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए, उसमें इस तरह के साइकाइट्रिस्ट्स हों, उनकी ये क्वालिफिकेशंस हो, साइकोलॉजिस्ट्स हों, उनकी ये क्वालिफिकेशंस हो, अगर किसी का होता है तो उसमें ऑफ कोर्स उन्होंने ले डाउन किया कि कोर्ट को इस केस में क्या करना चाहिए. अपनी तरफ से कोर्ट एक असेसमेंट नहीं दे सकती कि हमें दिख रहा है कि ये दिस पर्सन इज नॉट मेंटली इल, सो देयरफॉर he or she is not mentally ill. No, there is a process, there is a procedure that the court has to go through and fulfill, and then of course medical board के लिए भी है. And then of course उन्होंने government को जो instructions दी थी कि ये उन्होंने बल्कि एक और भी अच्छी instructions दी थी, क्योंकि it's a very lengthy judgment, it's full of directions and very good law that's been laid down कि forensic जो psychiatry है उसके भी units और facilities हैं वो establish होने चाहिए, because ये जब केस की समात हो रही थी और डिफरेंट हेयरिंग्स हुई थी, और ये बहुत लंबी समात चली है, बहुत सारी हेयरिंग्स हुई हैं, बहुत समझा गया इसको, तो उसमें ये भी क्वेश्चन एक रेज हुआ था, और एक कंसर्न रेज हुआ था, इशू रेज हुआ था कि पाकिस्तान में इतनी फोरेंसिक जो साइकाइट्रिक सर्विसेज हैं वो इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है. तो कोर्ट ने उसको भी जहन में रखा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो फेडरल जुडिशल अकेडमी है और प्रोविंशियल जुडिशल अकेडमीज हैं, उनको लॉयर्स, प्रोसिक्यूटर्स, जजेस, इनको ट्रेन करना चाहिए मेंटल इलनेस पर, ताकि उनको पता चले, क्योंकि ऑफ कोर्स पहला स्टेप तो एक जज ने ही देखना है, उसमें उन्होंने ही असेस करना है कि आया ये जो अक्यूज्ड की प्ली है ये क्या मेंटली इल है या नहीं, और अगर प्ली आती भी नहीं है तो क्या मुझे लग रहा है कि ये मेंटली इल है या नहीं है. I mean, at least आपको you must be trained इतना कि आप वो initial symptoms तो spot कर सको, at least to make an inquiry into somebody's mental health. बिल्कुल, I totally agree with you. एक और मेरा आपसे ये सवाल था कि जो while you were explaining this judgment, you mentioned schizophrenia was initially not recognized as a mental health, as a mental health issue, or sorry, you mentioned something about it not being. I mean, if somebody on death row had schizophrenia, तो क्या before this judgment they not they didn't give that, उनको वो नहीं मिली थी. How should I say this? उनको फिर भी the death row से sort of shift the commutation of the sentence from the नहीं होता था, नहीं हुआ था क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये जो कि एक्चुअली इतनी हाउ शुड आई पुट इट, इतनी डीप असेसमेंट नहीं हुई थी, बिकॉज कोर्ट का मकसद यही था समझने का, ताकि उनको भी पता चले कि भाई मेंटल इलनेस होती क्या है, किस किस्म की मेंटल इलनेसेस होती हैं, किस किस्म की मेंटल इलनेस में क्या कुछ करना चाहिए. इनमें जो 2 प्रिजनर्स थे, एक का तो एक्चुअली ड्यूरिंग इनकार्सरेशन उनकी जब मेडिकल बोर्ड ने ये असेस किया था कि ड्यूरिंग इनकार्सरेशन उनको हुई है, उनकी मेंटल इलनेस डेवलप हुई, और एक ही एक्चुअली पहले से थी, बट the trial court had failed to take this into account, and the Supreme Court had sort of really pointed this out and expressed disappointment कि ये ट्रायल कोर्ट को देखना चाहिए था कि ये मेंटल इलनेस जो है, ट्रायल कोर्ट ने without delving into an assessment, without delving into an objective assessment, or without making any effort, had just said that this person does not appear to be mentally ill, therefore he is not mentally ill. और वो एक प्रॉपर स्किज़ोफ्रेनिक थे जब उनका असेसमेंट हुआ. दूसरी जो खातून थी वो उनको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था. तो ये इस तरह ये इनके केसेस, क्योंकि ये रिव्यू पिटिशन थी और ये पहले भी जा चुके थे, केसेस भी डिसमिस हुए, बट इन द फाइनल राउंड सो टू स्पीक उन्होंने फिर कहा, उन्होंने बाकायदा डेल्व किया, once and for all they did lay down a law. ये बहुत एक बड़ी बेंच बैठी थी, 5 मेंबरान की बेंच थी, और उन्होंने एक एक चीज को देखा था कि ये प्रीवियसली क्यों नहीं हुआ, ये और ये दोबारा आ रहा है, और ये एक
हमारे पास एक प्रॉब्लम है. दिस इज जस्ट नॉट अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, दिस इज अ प्रॉब्लम एल्सवेयर ऑल्सो. 2015 में भी इसमें इंडिया में काफ़ी डिलिब्रेशंस हुई. इंडिया में भी डेथ पेनल्टी दी जाती है, अमेरिका में भी डेथ पेनल्टी दी जाती है, बट उन्होंने कहा कि जो जिनको मेंटल इलनेस जिनकी प्रूव हो जाती है उनको तो अपना क्राइम समझ नहीं आ रहा, उनको पता नहीं चल रहा, दे आर नॉट इन दैट, दे आर नॉट लिविंग और लीडिंग अ रेगुलर लाइफ और नॉर्मल लाइफ, सो टू स्पीक. तो उनको तो जब अपना समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उनके साथ, तो इट्स नॉट उनकी, Or दिस the इज fact that अगेंस्ट. the act that they're about to commit is illegal or wrong. Yeah, Um, yeah, and absolutely. So, yeah, then it does not make sense for them to be, incarcerated and for such a long period of because time. incarceration का पर्पस क्या होता है? आपका क्रिमिनल आपकी जो डेथ रो का पर्पस, डेथ पेनल्टी का पर्पस यही होता है कि रेट्रिब्यूशन, डिटेरेंस, एक Deterrence. एक इंसान को ये रियलाइज करवाना कि एक तो the act that they committed was wrong, and the fact that they are serving punishment for it. But if a Yeah, person doesn't understand that the act that they committed was wrong and absolutely. or illegal, so does that mean that they should still not punish that person because of? I mean, it's a question. I'm just wondering if you would like to offer your 2 cents on it. I think again it's a tricky question, which is why I think cases like these are decided upon. वो वही वाली बात है कि इसमें एक्चुअली डिफरेंट किस्म की जो आपका पनिशमेंट सिस्टम है, बिकॉज लॉट ऑफ कंट्रीज, आई मीन हम वाले जैसे हम पीनलाइज करते हैं और डिटरेंस बेस्ड हैं, काफ़ी रिफॉर्मेटिव जस्टिस की तरफ जाते हैं. And for some countries, reformative justice has proved to be a very good क्या कहते हैं आइडिया. और उसमें ये कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोलते हैं और उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, उनकी प्रॉपर एक सो टू स्पीक एक ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनको बताया जाता है कि जो आपने किया है वो गलत किया है और उसको दोबारा ना करें और वापस जाएं आप सोसाइटी में और सही तरीके से रहें, और एटसेट्रा एटसेट्रा. एक डिफरेंट आ जाते हैं. रिफॉर्मेटिव जस्टिस होता है, रेट्रिब्यूटिव होता है, रिहैबिलिटेटिव होता है, फिर एक बिल्कुल जो है एक सख्त से सख्त सज़ा. एक जो काफ़ी जस्टिस सिस्टम्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, जब तक सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये डिटर नहीं होगा क्राइम. उसके भी प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा वो प्रूव नहीं होता. सख्त से सख्त सज़ा भी मिल जाती है पाकिस्तान के क्या सिस्टम क्राइम है? के लिए. पाकिस्तान में जो आई थिंक बात तो होती है रिहैबिलिटेशन की, बट उस तरह है नहीं. कुछ जेल्स में इट्स गुड टू सी के रिहैबिलिटेटिव सेंटर्स भी हैं, ड्रग रिहैबिलिटेटिव सेंटर्स भी हैं, मगर द जनरल आइडिया स्टिल इज कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, और सज़ा दी जाएगी तो डिटर होगा क्राइम. बट पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली सख्त से सख्त सज़ा डिटर नहीं करती. The certainty of I don't conviction think that's deter. Pakistan's problem. That's just psychology, criminal Yeah, psychology. We try probably. to understand. कि सख्त Yeah, से सख्त सजा doesn't always prevent occurrence of such offenses, right? But then again, that's a debate that needs another yeah, that's session, another debate and that's altogether. a never-ending debate. That's an But amazing debate. thank you so much, Jugnoo. And if अगर आपके कोई Jugnoo से in the last 30 seconds, if you have any questions, do let us know. I think we've pretty much addressed all of your concerns. Um, Sorry, I'm just going to quickly do this before we sign out. I'm scanning through all of your questions and your comments कि कोई मैंने कोई किसी का question miss तो नहीं कर दिया या comment skip तो नहीं कर दिया. Yeah, either way, guys, if we once we sign out, once this call ends, you can always comment, and Jugnoo will respond. आप वकील online community में जाके भी अपने सवाल लिख सकते हैं. We would love to respond to your questions. कोई भी आपके सवालात हैं murder trial related, feel free to ask. We are here to help you, assist you, and to make you more aware. Thank you so much for signing in, for attending this talk. हम इस तरह की conversations और करते रहेंगे. Do pitch in your, give us your ideas exactly कौन से legal topics पे बात करनी चाहिए. Jugnoo we would love to have you again. Thank you so much for taking Thank time you out so for much. this, especially so Thank you so late in much. the night. सुबह आपका I'm sure it's a Friday, so you have probably have a court day. But thank you so much for joining us, everyone, and take care of yourself. Allah Hafiz. Thank you, Allah.